everyone, so this is today's newspaper analysis May 4 2026। तो आज का हेडलाइन देखते हैं। हेडलाइन में है कि रिजल्ट टुडे ऑल आइज ऑन बंगाल। तो जहाँ जहाँ चुनाव हुए तो वहाँ पे आज रिजल्ट आ रहा है और बंगाल में लाइक सबसे वी कैन से दैट कांटे की टक्कर चल रही है बीजेपी एंड टीएमसी में। सो लेट्स सी। नेपाल ऑब्जेक्ट ऑन मानसरोवर यात्रा विया लेपू लेक, इंडिया से अनजस्टिफाइड। तो हम लोग को बेसिकली ज्योग्राफी के हिसाब से यू शुड नो व्हाट इज़ लेपू लेक। विवेक बिहार में ट्रेजेडी हो गया था जिसमें एसी में ब्लास्ट हो गया था, जिससे लिखने 9 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। एक सद्भाव यात्रा निकाला है निशांत ने, लाइक नीतीश कुमार की लेगेसी के लिए। ठीक है, लेट्स सी। बस पता होना चाहिए कि यात्रा का नाम पूछ सकता है, तो वी कैन से सद्भाव यात्रा 300 किलोमीटर का। बस इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो मुझे नहीं लगता है ये होगा एग्ज़ाम के पर्पज़ से। Eyes in space, Indian startup launches a first of its kind satellite via SpaceX rocket. Indian startup makes a mark. Galaxy is one among the several Indian space startups that are beginning to make their presence felt. Agnikul Cosmos, another startup from IIT Madras, has built the world's first 3D printed rocket engine, while Skyroot has tested India's first privately built rocket. Companies like Pixel, Dhruva Space, and Bellatrix have been demonstrating impressive innovations in the satellite technology। तो इंडिया का भी बहुत सारा स्टार्टअप है जो बहुत अच्छा कर रहा है। सो आप ये जब क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ इंडिया स्टेक एंड रोल इन स्पेस सेक्टर, तो आप ये सब डाल सकते हो कि इंडिया का जो इसरो है विच इज़ गवर्नमेंट, एंड ऑल्सो इंडिया इज़ डूइंग ग्रेट इन प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पे रील बनाते बनाते 1 डेड। मनोज सिन्हा एंटी ड्रग रैली इन श्रीनगर में एंटी ड्रग रैली हो रहा है, एंड मनोज सिन्हा इज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ कश्मीर। ओके, सो ये है हाउ इंडियाज न्यू इमरजेंसी मैसेजिंग सिस्टम वर्क्स। On Saturday morning, many smartphone across India suddenly played a sharp beeping sound accompanied by the vibration. A pop message flashed on the screen, another language with the headline "Extremely Severe Alert." While many have been taken aback, this was a pan-India test of mass broadcast system called Cell Broadcast to alert people during natural or man-made disaster. At present, the government issued disaster cell broadcast technology in difficult to miss। ठीक है, तो बेसिकली हुआ था हम लोगों के साथ, फ़ोन में एक मैसेज आया था बहुत ही लाइक वाइब्रेशन एंड बीप साउंड के साथ।
इसमें एशिया में जापान वाज द फर्स्ट टू अडॉप्ट, 2007 में हुआ था। इन एशिया साउथ कोरिया सिंगापुर हैव डिप्लॉयड दिस। तो ये साउथ कोरिया मतलब सबसे पहले जापान में आया, फिर साउथ कोरिया और सिंगापुर में भी आ गया था। और यूएस रोल्ड आउट इट्स वायरलेस इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम इन 2012 में हुआ है। यूरोप में भी होता है। हाउ इट वर्क्स, तो एज पार्ट ऑफ डे टू डे नेटवर्क functionality, cell towers communicate with phones within their reach, providing information such as network connected to according to GSM Association and global body that represents the network operators. Cell broadcast technology uses no personal data. Mobile phone can receive messages without the need for user share phone numbers or location data. It needs no app, no subscription. The only requirement is that phone is switched on and configured to accept such messages. It is much more conspicuous than SMS, owning its distinct alert tone and vibration. This can draw people's attention even in the noisy environment. It will override all ongoing tasks on the mobile phone, including call, and would be delivered even if the device is silent or DND mode. As a climate-related disasters such as flash floods, extreme temperatures, and cyclones become more frequent and severe in India, technology such as cell broadcast extremely important. Last week, DRDO and the Navy successfully launched the salvo of short-range anti-ship missile. Development partner is DRDO. फिर सैल्वो टेस्ट किससे रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो शिप बॉर्न डिफेंस सिस्टम। ये बेसिकली जो वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उससे रिलेटेड है। वाई द बेंचमार्क ऑयल प्राइसेस डिडंट शो द फुल पिक्चर। Since the war began, the highest Brent crude has traded it's about $126 per barrel, but refiners have been likely to paying a lot more. After the Hormuz disruption, Asia should build an energy security alliance. An exit of UAE from OPEC is further evidence of the fractured relationship amongst the Gulf oil exporters and the terminal volatility of the international petroleum market. It deepens the urgency of Asia to shift away from fossil towards renewables. Not all Asian countries have green energy strategy in place, and some have impressive progress, but no country has successfully scaled up the renewables to the dominance of its energy consumption basket. The question arises, how can the shift be accelerated? Or one proposition that prima facie seems fanciful would be for the Asian countries to leverage their green assets to identify and tackle the areas of overlapping interest regarding the green transition. The proposition is fanciful because, unlike the IEA, Asian countries do not share a common political ideology or system, but the region does have a common purpose in decarbonization and energy security. So, it's the third role as an energy think tank. AECC should research how best the contemporary assist the members can be combined to generate a positive some green outcome. ये एक नया शिफ्ट आ रहा है, मोड इथेनॉल इन द टैंक. The Ministry of Road Transport and Highway has issued a draft notification proposing the recognition of E85 मतलब कि 85% ethanol blended and even 100% as an automotive fuel. This is against the 20% that has already been achieved and made mandatory for all the petrol sold in India
from April 2026, the draft amendment to the Central Motor Vehicle Rules 1989. The timing of the move is significant, coming amid the unprecedented energy supply shock caused by the conflict of West Asia and closure of the Strait of Hormuz, while marketing companies are now realizing that around 75 rupees for every liter of petrol net of the dealer commission and taxes. At this price, they are reportedly cruising around 14 rupees per liter. The ex-refinery prices is just 89 rupees per liter. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, so you can check. There is no doubt, however, the current oil shock is an inflection point for biofuels and for Indian policy makers to think beyond the incremental ethanol blending. The time for the flex fuel has indeed arrived. तो बेसिकली ये हमारा है फ्यूल शिफ्ट के बारे में, इथेनॉल के बारे में, कि अभी हम लोग E20 यूज़ कर रहे हैं, फिर हम लोग E85 जाएंगे, फिर इवन E100 भी जा सकते हैं, और जो भी हम लोग को क्रूड ऑयल और वेस्ट एशिया में अनस्टेबिलिटी है उससे कैसे डील करना चाहिए, कैसे हेल्पफुल हो सकता है, उससे रिलेटेड है. ये कि हमारे नेबरिंग कंट्री से न्यूज़ आ रहा है. नेपाल गवर्नमेंट सेट टू कैंसिल 1600 पॉलिटिकली मोटिवेटेड अपॉइंटमेंट्स. तो आप देख रहे हैं कि अपॉइंटमेंट्स में कितना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है इन अ स्मॉल कंट्री. तो बिग कंट्रीज़ में क्या ही होता होगा. यह है शांति एक्ट के बारे में जो आया था, न्यूक्लियर सेक्टर. Shanti Act will allow the Atomic Energy Regulatory Board to play a larger role in regulating the nuclear power plants. Earlier, the board depended on the DAE for its budget and administration until the Act accorded it with a statutory status. So I think this was all in today's newspaper from exam perspective. Thank you.